Two similar spheres, each of mass m and traveling with a speed v, are moving towards each other. The spheres have a head-on elastic collision. Which statement is correct? The spheres stick together on impact. The total kinetic and अच्छा अब ये पहले क्वेश्चन रीड कर लो. ये हेड ऑन है, ठीक है. हेड ऑन. कलीजन के बारे में कह रहे हैं मुर्तजा. अच्छा, ये डायनामिक्स में दो टॉपिक्स हैं ना. डायनामिक्स के चैप्टर में देयर आर टू टॉपिक्स. वन इज द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन and the second topic is the momentum. So MCQs come mainly, a lot of MCQs come on momentum like linear momentum and conservation of momentum. So the question says that two similar spheres, each of mass m, and they moving towards each other. The spheres have a head-on elastic collision. So they collide elastically. So you should read the question and tell me how to do it. Okay, so it says two similar spheres have a mass of m. So their mass is the same and they're traveling with speed v towards each other. They have a head-on elastic collision. So it's an elastic collision. So yeah, since it's an elastic collision, they will rebound after colliding. अच्छा, अब इसमें देखना पड़ेगा कि मोमेंटम तो रिबाउंड पे 2 mv हो जाएगा. अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनका वी हैव अ थीम टू रिमेंबर बिकॉज वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक. सो यू शुड रिवाइज द थ्योरी विद मी. तो लुक, व्हेन द collision is elastic, total kinetic energy before collision should be equal to total kinetic energy after collision. I have rejected the first option because when you say stick together, it means coalesces. But coalesces is not elastic. Coalesces is never elastic. Examiner says it is elastic. Do you remember what is coalesces? Yeah, sticking together. Yes. The total kinetic energy after impact is mv square. I have calculated total kinetic energy before collision. So it's coming mv square. So it's matching. Total kinetic energy before impact is zero, which is not possible. If two That's particles, not possible. Yeah, it can't be possible. D, the total momentum before impact, I have made the calculation and my total momentum before impact is coming zero. So option D is rejected. And as I have shown the working here, I advise you should do this working. It's very important to Yeah, recall the sir, I'll copy this 1 minute. understanding required, not only copy. So this is the source of rejection for D. And this is the source of rejection for source of acceptance for B.
Okay, sir. Question number 2 says, which row correctly states whether momentum and kinetic energy, so they're specifying two quantities here, momentum and kinetic energy, are conserved in an inelastic collision in which there are no external forces. Okay, This no external forces are involved. Yeah, so in an inelastic collision, uh, the what do you say? The momentum is conserved and the kinetic energy is not conserved. hmm, Sir, yes, momentum is conserved and kinetic energy is not conserved. momentum is conserved and kinetic energy is not conserved. Good answer. Because it's a theory that kinetic energy is not conserved, momentum is conserved. So that answer is B, perfectly right. Good. Now, next part. Okay, sir. By the way, if there were external forces involved in question 2, then what would the If external forces are disturbing the system and the system is not isolated, then obviously momentum will also not conserved. Now, this okay, question is going to start. okay. Two spheres approach each other along the same straight line. Yes, please continue. Relative speed of, okay. Two spheres approach each other along the same straight line. Okay, so their speeds are u1 and u2, which are the initial speed before collision. After the collision, the spheres separate with speeds v1 and v2 in the directions shown below. Which equation must be correct if the collision is perfectly elastic? Okay, so they specified the collision is elastic, so speed before collision and after collision are equal. The relative speed of approach. Relative speed of approach is equal to relative speed of separation. Yes. Relative speed of approach is equal to relative speed of separation. So u1 plus u2 is equal to v2 plus v1. When you say the word speed, you should remember that speed does not include the plus minus. ठीक है? अब इसमें क्या रूल था, हम रूल रिवाइज कर लेते हैं. That I have shown you the rules here which are important. Relative speed rule. Speed is plus. Arrows in same direction are subtracted. Arrows in opposite direction are added. तो अब ये जो Added रूल्स, here. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये साथ साथ थोड़ी थोड़ी रिवीजन हम करते जाते हैं. दिस इज आवर वे वी डू दैट. सो ये जो रूल्स हैं इनको आप रिवाइज कर लो, क्योंकि रिलेटिव स्पीड एमसीक्यू में बहुत आती है. पेपर 2 में इट्स अ वेरी रेयर टॉपिक. सो आई हैव आइडेंटिफाइड द रूल्स हियर. नंबर 1 ये कि स्पीड हमेशा प्लस होती है, स्पीड इज नॉट नेगेटिव. Arrows in same direction are subtracted. Arrows in opposite direction are added. Can I note this down? The box. Okay.
उसी के आगे लिख लो, दैट्स गुड। लेकिन मेरा मशवरा है कि इफ यू फाइंड समथिंग यू वांट टू नोट डाउन ऑन अ सेपरेट पेज और उसको अपने सामने रख लो, ताकि ये वो नोट्स हैं जो आपको बीच बीच में मिल रहे हैं। अगर आप इसमें लिखोगे तो ये गुम हो जाएंगे। Okay, so my answer that I told for this question was C. C correct है ना? हम्म। मैंने 3C कहा था इसका आंसर। नहीं, इसमें डी है ना, क्योंकि इसमें एरोस दो, मैंने ऊपर लिखा भी देखो, U1 + U2, बिकॉज एरोज आर ऑपोजिट हियर, V1 - V2। ओ यस यस यस। तो यहाँ पर जो एरोज हैं, वो जो मैंने नीचे एक नोट्स बनाए हैं, उससे कंफ्यूजन आपको शायद हो रही होगी, तो मैं उसको हटा देता हूँ। और अब आप मुझे बताओ कि मैंने U1 और U2 को ऐड क्यों करा, और V2 और V1 को माइनस क्यों करा। U1 और U2 को ऐड किया है बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्पीड रूल में जब एरोज सेम डायरेक्शन में हो उनको ऐड करेंगे स्पीड्स को, और यस, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ। देखो क्या रूल है, रिपीट करो। एरोज इन ऑपोजिट Arrows in डायरेक्शन आर opposite एडेड। directions are added. हाँ. Arrows in same directions are subtracted. यस, वेरी गुड, नाउ दिस इज द रूल। सो अब Okay. ये भी आप साथ में कंप्लीट कर लो, देन वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All right. Question number 4 states an object traveling with velocity v strikes a wall and rebounds हम्म, as shown. द वर्ड इज रीबाउंड। रिबाउंड मीन्स Yeah, rebound. वेलोसिटी नेगेटिव। Which property of the object is not conserved? It's not B, and could be kinetic energy. So it's A. ओके, हाउ वी गॉट ए। Because they said it's rebounding. When you have a rebound, the velocity will become negative after rebound. The kinetic energy will still be half mv square, क्योंकि square will make negative plus, but momentum will be minus mv। ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसको गौर से देखो वर्किंग को, कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं बदलती, बिकॉज स्क्वायर विल एक्चुअली कन्वर्ट माइनस टू प्लस। सर ये जो है ये जो रिबाउंड कर रहा है इट्स बेस्ड ऑन साइन कन्वेंशन है ना? हाँ, दिस इज कॉल्ड द साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन एक और दफा एक्सप्लेन कर दो मुझे वन टाइम. Whenever the direction reverses, velocity becomes negative. Okay. Direction reverses, velocity becomes negative. All Momentum right. vector becomes negative, but kinetic energy, being a scalar, does not change the sign. Repeat karo. Oh. When the velocity changes its direction, it becomes negative, and since kinetic energy is a scalar, it does not change its sign. Right. अब इसको वर्किंग चेक करो. Yes, okay. What is the sign convention? When object rebounds, then velocity becomes negative, Okay, momentum yeah. becomes negative, but kinetic energy, it's a scalar, it doesn't become negative. The diagram shows two spherical masses approaching. Okay, so their relative speed of approach each other head on at an equal speed u. Okay, so the arrows are traveling in the opposite direction, so we know these they will be added. What is the One is of conservation of momentum? huh? What is the principle of conservation? Momentum before collision is equal to the total momentum after collision. वेरी गुड. सो अब ये लॉजिक बन गई. अब इसको आपको हर एक पे लगाना पड़ेगा. ही इज प्लेइंग अ ट्रिक. Yes. He is playing a trick with you. He is using the word not. Yeah. Oh, okay. Yeah, yeah, I got it. So it should be D, right? Hmm. अब ये करके देखो ना. You cannot guess it like this. You have to work out every part. This is A level MCQs. So look, I have worked out every option. Total momentum before collision is m1u1 plus m2u2. I have taken the velocity signs plus minus. I have worked out my initial momentum is coming mu. तो पहले initial momentum की working देखो और फिर हर option को workout करना पड़ेगा. यानी it's a proper question. First, you should work out the total initial momentum, which I have shown on the right hand side. Then option A, option B, then option C, then option D, and you have to work out every option. Acha, one option will not get MU. That all option will get MU except one option. That will be the answer which will not get MU. Yeah. Hmm. So mu, momentum before. Yeah, so it's B. Right.
अब आप वर्किंग नहीं कर रहे ना, यू आर लुकिंग माई वर्किंग एंड यू शुड अंडरस्टैंड हाउ आई गॉट बी. I'm understanding because you use the principle of conservation of momentum and you substituted the values and कोई then you एक. got mu and all the other options agree with mu except for the option B. हाँ, लेकिन That's कोई why. कम से कम ए बी सी में कोई एक अपने हाथ से सॉल्व तो करो, ताकि आपको वो एलसीएम वाला भी मसला रिकॉल हो जाए. यानी वो देखने से लग रहा होता है बहुत सिंपल है, लेकिन मैं इसको हटाता हूँ. आप कम से कम इनमें से कोई एक ऑप्शन मुझे वर्कआउट करके दो, मे बी. चलो ट्राई ए करो जरा. Okay. इससे प्रैक्टिस होगी, विजुअलाइजेशन से तो हमेशा लगता है हो रहा है. What is the final velocity? यस, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन ना. दिस इज द फाइनल वेलोसिटी 5/3 u. On the left hand side, I substituted the initial velocities values as u over 3 and 5 over 3. ओके, Yeah, so इसको पुट करो ना और सॉल्व करके बताओ टोटल मोमेंटम कितना आ रहा है ए में. थोड़ा जल्दी करना होगा. यू टोल्ड मी यू गॉट इट. अब देखो, जब वर्कआउट लिख कर करते हैं ना तो उसमें मसले आते हैं. sir, can you show the previous slide? वो जब दिखाऊंगा तो आप कहोगे मुझे समझ में आ गया, मैंने कर लिया. Minus t. Oh, yeah, yeah. No, no. So, yes. Plus minus. अच्छा, तो आपने साइन कन्वेंशन भी इधर यूज किया है. हम्म? तो साइन तो इसमें होगा ना, आपने बिकॉज हियर इट इज वेलोसिटी. थोड़ा जल्दी करो. अब आप मुझे बताओ कि अब आप मुझे ऐसा करो, सी वाला सॉल्व कर दो, सी वाला करके दिखाओ, सी पार्ट.
आई एम वेटिंग। मतलब वी डोंट हैव इनफ टाइम। अब आप क्या कर रहे हो? हेलो। Yes, I'm solving it. Yeah. जरा जल्दी सॉल्व करके मुझे उसकी पिक्चर भेज दो सो वी कैन मूव फॉरवर्ड ना। Okay. I think you got it right. The picture. अब मुझे अच्छा, वेरी गुड। लेट मी चेक। इसमें फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? यू हैव सॉल्व्ड इट, आई गॉट दिस पिक्चर, बट इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? आपने डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? लुक, आई शो यू द सी। 36 मेरे पास आ रहा है रिड्यूस होकर एम यू। ये आप किस तरह से? MU. हाँ, एलसीएम में गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पहले स्टेप से ही लिख रहे हो। उसके बाद आपने क्या लिखा है? ये स्क्वायर कैसे बन गया? एलसीएम तो एलसीएम में स्क्वायर नहीं बन सकता। दोनों के डिनोमिनेटर में थ्री थ्री है, तो ऊपर एक और एम तो है ही नहीं, तो मैंने एम। क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई. लेकिन मुर्तजा, देयर इज अ प्लस बिटवीन देम। हाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इन केस ऑफ प्लस? अच्छा, आप इसको इरेज करो और ये वाली वर्किंग कॉपी करो समझ के, जल्दी से प्लीज। ये वाली वर्किंग अच्छा, तो इरेज कर। ये जो न्यूमरेटर्स हैं ये ऐड होंगे 3MU और फिर डिनोमिनेटर सेम होगा. एलसीएम है ना? हाँ. एलसीएम लेते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर जो होता है एलसीएम में, ये एलसीएम का केस है, देखो ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू, लुक हियर, अ सिंपल मैथ्स क्वेश्चन, 1/2 प्लस 3/2, तो एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। ऊपर आएगा हाँ. 1 + 3, तो ये 4/2 होगा। जब डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम बनेगा। तो अब आप इसको इरेज करो, सी को, और बी ए को भी इरेज करो। मेरे पास ए के लिए आया है -2MU प्लस 5MU/3. फिर सही है ना? एलसी फिर एलसीएम लो। मसला आ रहा है एलसीएम में, यू आर मेकिंग सम मिस्टेक इन एलसीएम। तो 3MU हो. हाँ, तो इट विल सिंप्लीफाई टू MU. यस। अच्छा, 1 मिनट, आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट. नहीं, अब आप मुझे ऐसा करो ना, ये करके दे दो, बी वाला करके दो। अच्छा, ओके.
बी का मेरे पास 0 आ रहा है। हम्म मेरे पास बी आ रहा है, देखो अभी भी कोई गलती हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, चेक करो दोबारा। लुक, आई एम गेटिंग mu/3, हाउ यू आर गेटिंग 0? -2mu + 2mu 0 -mu। -mu कैसे आ गया? 2m है ब्रैकेट के बाहर। हाँ तो सिंप्लीफाई करो माइनस। तो 2 और 6 कटेगा, 2 1 जा 2 और 6 नीचे था तो 2 कट के 3 हो गया नीचे। ओके, आई थिंक आई अंडरस्टूड दिस। मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है अभी भी एलसीएम में का मसला है। खैर अब इस पे और टाइम नहीं अच्छा, लेते। तो ये एलसीएम मुझे प्रॉब्लम हो रहा है इसमें क्या बोलते हैं, ये जो एलसीएम की चीज है उसमें मसला हो रहा है। एलसीएम आप जैसे लेते हो वैसे लो। एलसीएम जो, जब दोनों नंबर सेम है तो एलसीएम क्या होगा, मैंने अभी तो आपको करके दिखाया। जब दोनों नंबर सेम होते हैं, जैसे मैं लिख कर आपको देता हूँ, m/3 प्लस 2m/3, एलसीएम क्या होगा? 3 होगा। 3 होगा, वेरी गुड। अब ऊपर बताओ। 3m। है, 3m कैसे आएगा? जब नीचे 3 3 सेम हो गया तो ऊपर तो खाली m आएगा। हाउ? तो 3 3 कट गया ना, ऊपर 3 कैसे ला रहे हो? एलसीएम लेते कैसे हम? टू जो भी एम प्लस एम इज 3m। तो ऊपर 3 कैसे आएगा? 3 3 तो जब ऊपर लाएंगे तो 3 3 कट जाएगा ना, 3 1 जा 3 हो हाँ, जाएगा। कट जाएगा। हाँ, और ओके। इधर आएगा। हेलो सर। आई एम वेटिंग, इधर क्या आएगा? एम प्लस। 3 3 कट गया, हम्म फिर क्या बचेगा? देखो ना, इधर ऊपर क्या आया था, m। इधर इधर 3 3 कट गया तो ऊपर क्या है, वही आएगा, बस जो ऊपर लिखा है वही आ जाएगा। हम्म क्या आएगा? 2m। और m+2m करो। 3m। 3m/3, सो वी गेट m। इस तरह वर्किंग करनी। आप जरा ये सॉल्व करके दिखाओ। देखो इसको कैसे सॉल्व करो। अच्छा, तो 2 is the LCM. Final answer will be m/2. हम्म हाउ आंसर इज 3m. राइट? हाउ? Okay, yeah, like I said, first you take the LCM as 2 and then you put 3m minus 2m as the numerator. सही है, 3m गुड। minus 2m. सही, उसके दिस इज फाइन। बाद फिर वो एलसीएम में सेम आ जाएगा। चलो अब ये वाला लेट्स ट्राई क्विकली दिस क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन टू का गुड टाइम, बट दैट वाज नेसेसरी टू, that was necessary to understand the difference. Now, a particle x has a speed v and collide with a stationary identical particle y. The collision is perfectly elastic. The word is again here, perfectly elastic. what are the speed and direction of motion of each of the two particles after the collision?
Yes. Okay, so after the collision, they said the speed and the direction. So for x, uh, for x, it will move to the right. So total speed of approach, relative speed of approach is equal to relative speed of separation. So you should work out every option. As I said, A level में यही करना चाहिए कि सारे option work out करो. What is the approach? Relative speed of approach is equal to relative speed of separation. So V plus U is equal to V, and here it is mv plus U. Hmm. I have calculated total momentum. अब हर ऑप्शन वर्कआउट करते जाओ. So why is it mv plus 0? Because the other particle was at rest now. Y was at Oh, rest. yeah. तो उसकी वेलोसिटी, मैंने इस सवाल को दोनों तरीकों से सॉल्व करा है. आई हैव सॉल्व्ड इट बाय बोथ द वेज. one way one way is the one way. I have solved it by one way of, what is the first way? One way is the method of momentum, and I have also solved in the bottom of the question by relative speed. Yeah. अब मैंने क्या करा मुर्तजा, आई हैव कैलकुलेटेड इन एवरी पार्ट, आई हैव कैलकुलेटेड द मोमेंटम. what was the momentum before collision? mv. So momentum after collision should also be mv. I have worked out every option and I have found out that A and B, two options are satisfying the mv case. Look, I have worked out. तो या तो A है या B है. लेकिन फिर मैंने रिलेटिव स्पीड की लॉजिक लगानी है. फिर दूसरी लॉजिक लगेगी तो उससे फिर कंफर्म हो जाएगा. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, look, there is a concept of perfectly elastic collision. लिखकर करोगे तो समझ में आ जाएगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर collision should be equal to total momentum after collision. But you know the tricky part is there. Even if momentum is conserved, it's not a guarantee that collision is elastic. So that is why I'm engaging relative speed also. Yeah. Okay, v over 2. Why did you substitute v over 2 in the value of the velocities? V over 2, Yeah, वो तो उसने दिया हुआ है ना. because वो तो क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन बी में लिखा हुआ है V/2. लेकिन उन्होंने ऑप्शन के अलावा जो क्वेश्चन है उसमें तो नहीं दिया हुआ स्पीड v अपॉन 2 है, तो हमें कैसे पता चला? V/2 लिखा हुआ है एक्स. देखो पार्ट बी पढ़ो, पार्ट बी के सामने लिखा है ना. v अपॉन 2 टू द राइट. हाँ, तो पार्ट बी, मैं तो पार्ट बी को सॉल्व कर रहा हूँ ना. आई एम सॉल्विंग पार्ट बी.
Okay. आई एम वेटिंग। जवाब जरा जल्दी देना। Yes, sir. So the speed and direction of particle X will be stationary and Y to the right. वो आप सॉल्व नहीं कर, अब सिर्फ देख के बता रही हो ना मुझे। अच्छा, रिलेटिव स्पीड से कैसे चेक हुआ कि ए आंसर है? relative speed is always the relative speed of approach should be equal to relative speed of separation. Yes. अच्छा, relative speed of approach है V plus M into V. नहीं, जो जब relative speed, when we apply the concept of relative speed, we do not put any mass, we just put only the velocity. Hmm. So when we talk about relative speed, we do not put the concept, we do not put the concept of mass. लेकिन आप Hmm. उसको देख लेते हो, फिर आप उसको लिखते नहीं हो ना। अब चलो, ये क्वेश्चन अभी आपने किया था मेरे साथ, ठीक है। फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आप सॉल्व आप करिएगा। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। देखो मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिखें हाँ, मैं और लिख रहा हूँ साथ। लिख के सॉल्व करिएगा। वो जो मसला ये आ रहा है कि व्हेन यू सी द वर्किंग यू जस्ट लीव इट एंड यू सी इट्स फाइन, ओके, तो उससे नहीं फायदा हो रहा। Okay, I'm working this out. ओके, प्लीज सॉल्व, आंसर शेयर करो। So answer will be what is this? 1 न्यूटन होगा ना, 1 न्यूटन।
1 Newton, right? बट देर एक चीज है अभी, फिर फॉर्मूला में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू फाइनल वेलोसिटी की, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग से वो नेगेटिव है, तो बिल्कुल उसको माइनस, पॉजिटिव ले रहे हैं। माइनस पुट हाँ। होगा ना, माइनस हम्म। लेंगे ना, माइनस पुट करेंगे ना। हाँ। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी -20 आ रहा है। सही है, तो आंसर क्या आ रहा हाँ, 1 आ रहा है ना मेरा फाइनल। है? वन कैसे आ रहा है आपकी 1 दोनों? नहीं है। नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वन तो फिर दोनों वेलोसिटीज ऐड नहीं हो जाएंगी। मेरे पास तो 100 न्यूटन आ रहा है। 12। फाइनल वेलोसिटी 12 है। लिखा हुआ है सवाल में। हाँ, तो वो तो क्या बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी है ना 12। उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो आप रिवर्स भी कर दो, लेकिन असल चीज ये है कि आप 12 और 8 को माइनस कर रहे हो किसी वजह से। जब फॉर्मूला में आप डालोगे तो एक एक 12 तो प्लस है, 8 माइनस है, जब दोनों माइनस होंगे तो माइनस कैसे हो जाएगा? देखो ना, फॉर्मूला में लिखा हुआ है एम वी माइनस यू। तो व्हेन यू पुट 12 फॉर एग्जांपल 8, तो 8 तो माइनस में डलेगा। तो जब दोनों नंबर माइनस में होंगे तो आप माइनस कैसे कर रहे हो? वो तो आपका आंसर ऐड होना चाहिए। अब आप बताइए, बोलिए। यहाँ पे क्यों नहीं करे बेटा क्लास? हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, आई कैन हेयर यू। लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी तो 8 है ना। हम्म, देखो मैं आप आज समझाओ, बेशक 8 है लेकिन वो -8 है ना। हाँ, -8 है। तो फिर कोई सी भी ऑर्डर में करेंगे 100 ही आएगा। वो तो फर्क नहीं पड़ा, आप लिख के करो ना, मुझे जरा लिख के अपनी वर्किंग तो बताओ कि आप माइनस कैसे कर रहे हो। समझ में ये नहीं आ रहा कि वो नंबर माइनस क्यों हो रहा है। मैंने -8 -12 किया था। तो -8 -12 इज -20। यही तो समझ में नहीं आ रही कि आप उसको कैसे, देखो मैं चलो लिखता हूँ -8, बताओ, -8 -20, सॉरी -8 -12 कितना होगा? दोनों माइनस है। माइनस हाँ, -20। हाँ, तो फिर -20 इंटू मास कितना है? 0.5। या दोबारा पुट के मतलब थोड़ा जल्दी करो करोगे। -10 आ रहा है मेरे पास। -10 आ रहा है, फिर डिवाइड डिवाइड मतलब पूरी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें ना। फिर मेरे पास -100 आ रहा है। अब आ गया 100, तो ये जब दोनों नंबर माइनस में है तो वैल्यू जो है वो प्लस में आएगी ना। सॉरी, वो जो नंबर है वो ऐड हो जाएगा। अब आप लिख के नहीं करें ना, मसला ये आ रहा है। चलो अब बहरहाल ये वाला करें, अब ये वाला करो। A molecule of mass m traveling at speed v hits a wall in a direction perpendicular to the wall. The collision is elastic. What are the changes in the kinetic energy and in the momentum of the molecule caused by the collision?
अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. हम्म. चेंज इन मोमेंटम. Change in momentum will be 2 mv. हम्म It's option B. ऑप्शन बी मेरे पास आ रहा है सी। इसकी वर्किंग देखो, मैंने इसको रिबाउंड करवाया। Okay, but why did you put velocity as positive? बिकॉज नो, वो तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर ही रहती है ना। हाँ, तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ पॉजिटिव होंगे. जो काइनेटिक एनर्जी वो तो साइन चेंज नहीं करेगी ना, बिकॉज इट्स अ स्केलर। अभी तो बताया था क्या क्या कंजर्व होता है। हाँ. अब आप फिर मुझे भूत बताओगे नहीं ना, but क्या 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 कंजर्व होता है जब रिबाउंड होता है? वेलोसिटी कंजर्व होती है। मुर्तजा प्लीज आंसर। काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, जब रिबाउंड होता है तो वेलोसिटी का साइन चेंज होता है। हाँ, अब आपके सामने लिखा हुआ भी नेगेटिव है। हो जाता है जब वही पूछ वेलोसिटी रिबाउंड होता है. हाँ. और काइनेटिक एनर्जी का साइन चेंज होता है। या नो नो, सॉरी. काइनेटिक का साइन चेंज नहीं होता। गुड। मोमेंटम नो. है। मोमेंटम इज अ वेक्टर, मोमेंटम का चेंज होता है। देखो याद रखो, एवरी वेक्टर विल चेंज इट्स साइन बट अ स्केलर डज नॉट। Kinetic energy does not change its sign due to rebound, but velocity and momentum, they do change their sign due to rebound. ओके. चलो, एनीवेज टुडे वाज नॉट अ गुड क्लास। हमने कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं किया। आई डोंट नो, बहुत मसले हुए आज तो। आई होप अगर आप यही क्वेश्चन दोबारा कर सकते हो, कैन यू डू द सेम क्वेश्चन अगेन 1 till 8, बिकॉज आई होप इनको आप दोबारा करोगे तो ये बेहतर हो जाएंगे, बिकॉज आज तो हमसे एलसीएम भी नहीं हो रहा सही। एनीवेज आई होप कि आप, इफ यू कैन ट्राई द सेम क्वेश्चन 1 till 8 अगेन। ओके सर. ठीक है, इंशाल्लाह फिर Sir, by the way, if I have